There is how many particles? How many particles? 100 particles मानो. Infinite तो कुछ होता नहीं है. There will be some amount of particles. There is suppose 100 particles are there. How many? 100 particles. And in these 100 particles, it is led to the temperature how much? 30 degrees Celsius. Very close. Lekin in our Delhi, there will be 100 particles. Yeah, it is more than the 100 particles. You know that automobiles are running. That smokes are coming, particles are there. Yes or no? Construction is going on. Through the construction, dust particles are coming, which is not required, which is unwanted particles into the atmosphere, in the lower atmosphere. Some industries are there, their chemical pollutants are there, those particles are there. So instead of 100, it become, I said that 180. Yes, tell me. Instead of 100, it become, I said, 180, 150. So temperature rise in the urban area will be there or not? तो कहीं पे बोला जाता है कि temperature of the urban region is increasing. So one of the factors I said that high amount of what? Chemical pollutant and other what? Suspended particles. And when these particles are more, then there will be more collision. Yes or not? What is dry adiabatic lapse rate? Everyone? 10 degrees Celsius. लेकिन दिल्ली में यही होगा क्या? और ये पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे नहीं, दे विल रिमेन ओवर देयर. तो ये 150 हो गए. सपोज करो इट इज 150, तो टेम्परेचर पॉसिबली यहाँ पे कितना हो सकता है? 35 डिग्री सेल्सियस. पहले कितना था? सो व्हाट इज द डिक्रीज इन टेम्परेचर एट 1 किलोमीटर? 15 डिग्री सेल्सियस. इफ इट मीन्स environment made by us can behave anyway. ऊपर में ये particles नहीं गए. These particles are not able to go up. So the environment can behave, just tell me, anyway. Getting my point? बस ये ध्यान में रखो कि particles are what kind of it. So I said that you can correlate it with what I said, that making urban area to be what? Heat. And that is becoming urban area heat island. And this question once GS it has been asked. Optional में पूछा जा सकता है. And the present time I am saying that the question in the GS geography is tougher than the geography optional. Clear? Geography optional questions are comparatively easy in nature, but the GS question comparatively harder in nature. I said that urban heat island समझ में आ रहा है? Means surrounding आपका एक फैक्टर मैंने बताया. इट इज नॉट ऑल द फैक्टर फॉर अर्बन हीट आइलैंड. अंडरस्टूड? Skyscraper, buildings, roads, concrete, so many things that we have to see. I said that now, and then surrounding to the city, what is there? Rural areas. And these rural areas may comparatively, if the what is I said that greenery is there, it is not open. It is not open. Soil is not open. Greenery is there, then there will be less dust particles, very very less. तो urban area के surrounding rural area तो ठंडा होगा ना. So this is what is the definition of island? What a land part surrounded by water body, and this urban area is surrounded by cold air, cold breeze. Therefore, we are saying that is a what? Urban heat island. It is converting into what? Urban heat island, and that is in your syllabus. Climate change को लेकर आपको दिमाग में रखेंगे. अच्छा ये मुझे बताओ मानसून किधर जाता है? Where do the monsoon goes? Where do monsoon goes? Monsoon is coming like this, and monsoon किस area में आना चाहेगा? In the low pressure area. They will try to come in the area, and हमारे यहाँ what the farmers are doing? Farmers are what is in a planting, and they are growing there what is in a seeds, and they are making their crops growing. They are not waiting the monsoon because they know that I said that how do the monsoon behave? Maybe 7 days, maybe 10 days late. Therefore, they are doing irrigation before the coming of monsoon. Due to the before doing irrigation, the one thing is there, agricultural land become what? Colder. Irrigation कर दिया तो agricultural land become colder. So that region become low pressure intensity get low.
And then region like all the cities become very, what is it, comparatively hot. So the monsoon is causing more rainfall in which region? Urban areas rather than rural areas. And who is doing? Uneven pattern of monsoonal pattern, making the farmers to think to grow the crops earlier. They are not knowing this understanding. And if they are doing every year the same thing, then what will happen? Slowly and slowly, monsoon started changing their pattern. जब एक चीज 50 बार होने लग जाएगा, तो monsoon will start. What is it? Changing the pattern. Understood it? So urban heat island. Understood? All the concepts are here and there correlated. You should know enough to how to correlate. Understood it? So I said that this dry adiabatic is understood. Which are the lapse rate we have seen? Tell me. Dry adiabatic lapse. Another understanding was there, ELR. And what is the environmental lapse rate? Tell me, what is the environmental lapse rate? दिखाया अभी मैंने 15 degree Celsius. दिखाया ना. Environment can behave anyway. In the urban area, environment can behave anyway. Let us go. This is a rural area. What is the particles? How many particles in the rural area? 100. Less pollution. 100 particles and then 100 particles here. Understood? The temperature will decrease by how much? How much temperature will decrease? 10 degrees Celsius. Dry adiabatic lapse rate is how much? 10 degrees Celsius per kilometer. But when the farmers are growing crops, that time the number of particles in the air comparatively reduces. And यहाँ पर suppose कितना हो सकता है? 60 particles. और upper atmosphere के movement की वजह से यहाँ पे 100 particles. और 60 particles यहाँ पर है, तो 60 particle की वजह से यहाँ पर कितना हो सकता है? 26 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि ये ग्राउंड है, ग्राउंड भी तो हीटिंग देता है थोड़ा. I said that. और यहाँ पर क्या है? 26 डिग्री सेल्सियस. एंड व्हेन देन 25 कैन बी देयर. एंड ऊपर में गए तो दैट कैन बी, आई सेड दैट, तो हाउ मच डिक्रीज इन टेम्परेचर? जब पार्टिकल्स रिड्यूस होंगे तो लेस कोलिजन. यस और नॉट? 100 पे 30 था तो 60 पे अराउंड इट इज, आई सेड दैट. और 70 पार्टिकल्स पे हाउ मच? 26. तो नाउ द एनवायरनमेंट इज बिहेविंग. It can behave in any way, 15 degrees Celsius to 4 degrees Celsius or 3 degrees Celsius, anything per kilometer. So environment can behave. Always try to remember this one. Environmental lapse rate is completely different. Do not consider it is a normal lapse rate. Normal lapse rate जो आप लोग पढ़ते हैं, that is I said that 6.5 degrees Celsius per kilometer. जो you study normal. Normally it is behaving like this. But I said that dry air behaves like I said that 10 degrees Celsius per kilometer. Environmental lapse rate can behave in any way. Maybe a 15 degrees Celsius, 14 degrees Celsius, 16 degrees Celsius, maybe 6 degrees Celsius, maybe 7 degrees Celsius, maybe 3 degrees Celsius per kilometer. Understood? Is it clear to you? And who is expansion for this? Who is responsible for this? Expansion. Adiabatic expansion and then particles available in those regions. Next point that I said that what is the meaning of latent heat? What is the meaning of latent heat? Yeah? Transferring? Place? Phase? Yes? Yes, anybody?
कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को, इन्हें एनी स्टेट ऑफ मैटर को क्या करो, from one form to another form, but the temperature should be, what I said, that constant. That is, I said that latent heat. I said that suppose it is an ice cube in a container and I am giving heat to this. And you know that there is in the ice cube there is a very high intermolecular bonding is there, yes, by the hydrogen bond. And when I am giving heat means energy, then इसके पहले थोड़ा सा इसमें पानी भी रखा हुआ था, इसके बाद मैंने देखा इसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस. And when I keep on giving the, what I said, that heat, कुछ देर के बाद ice has been melted under the heat and there is a water, then I measure the temperature and I found it is 0 degree Celsius, temperature is constant. And again I keep on giving the heat, then again this substance has been melted, this ice has been melted, and again I measure the temperature, it is what? 0 degree Celsius. And again I said that given the heat it has been converted into liquid and I measure the temperature 0 degree Celsius. So where the heat has gone? It has gone into changing the state of matter, phase of matter. Yes or not? Solid to उसको इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग में जो एनर्जी थी उसको तोड़ने में एनर्जी चली गई. यस और नॉट? अब ये कैसे इसके पास एनर्जी है? सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर मोर काइनेटिक एनर्जी और लिक्विड हैज मोर काइनेटिक एनर्जी. अब लिक्विड किधर भी मूव कर सकता है, सॉलिड कैन नॉट मूव. सो ये इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. अंडरस्टूड? इट मींस दिस इज नोन एज एन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको आप लोग कभी 9th 10th में पढ़ेंगे. लैटेंट हीट ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ matter, keeping the temperature constant. Keeping the temperature constant. I said that suppose this water body, I said that first the next point I want to, अभी मैं दोबारा आऊंगा latent heat पे. अभी हमने क्या देखा? latent heat of fusion. What we have seen, latent heat of fusion. लेकिन थोड़ा सा इससे पहले माई क्वेश्चन इज, आई सेड दैट व्हाट इज एवोपरेशन? व्हाट इज एवोपरेशन? हाँ, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. एट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा. दोबारा बोलो, क्या डिफरेंस है? एट व्हाट टेम्परेचर? हाँ हाँ हाँ, हाँ, यस. जनरली मैं इस क्वेश्चन को पूछ के थोड़ा हंसता हूँ. कुछ बच्चे आंसर भी देते हैं कि एवोपरेशन मींस चेंजिंग द लिक्विड इनटू वेपर और गैसेस स्टेट एट 100 डिग्री सेल्सियस. इट इज नॉट एट 100 डिग्री सेल्सियस. वो तो आपका बॉइलिंग के लिए होता है. यू नो दैट कभी आपने वेपर बनने के लिए तो आपके मुंह से भी वेपर बनता है, देखा होगा. तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट तो है नहीं, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस तो है नहीं. हैव यू सीन समटाइम्स इन द विंटर, आई सेड दैट ponds आर आल्सो गिविंग द वेपर. हैव यू सीन? सो हाउ डू दे आर? आई सेड दैट सिंपल है. सिंपल थिंग इज दैट वेपर बनने के लिए क्या होना चाहिए? हु हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड और गैस? टेल मी, हु हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड और गैस? गैस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी. मैं अभी परफॉर्म करूंगा, यू विल बी एबल टू हैव. So gas has more kinetic energy, yes or no? So simply we have to give more energy to the liquid. Liquid के particles टूट कर किस में आ जाए? Gaseous state में आ जाए. Yes or not? Simple. I have to supply more energy. And इसके लिए
हमारा यहाँ पर क्या है, देयर इज एन कंटिन्यूअस सम प्रेशर इज ओवर देयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कुछ प्रेशर है यहाँ पे, सम प्रेशर इज देयर, यस और नॉट. एंड व्हेन आई एम गिविंग द हीट टू दिस, देन द हीट विल गो एंड हीट इसके प्रेशर को बढ़ाएगा. ये क्या है, दिस इज एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस और नॉट. मे बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.8 कुछ भी हो सकता है. And I said that मैंने इसको heat start giving, then what will happen? They will start taking the heat और नीचे से क्या बनाएगा? What it will try to make? Vapor बनाएगा, and that vapor will put the pressure. ये बनाने की कोशिश करेगा कि मैं आना चाहता हूं, I want to come out. He started putting the vapor pressure on this one. Yes or not? So when the pressure applied by this one become more than the pressure applied by the atmosphere, then it started coming. तो सिंपल है कि इसकी टेम्परेचर को मुझे बढ़ानी पड़ जाएगी, यस और नॉट, देन इट कैन कम आउट. देन इट मीन्स आई सेड दैट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड शुड बी ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सो दैट ये बाहर आ जाए, यस और नॉट. ही शुड हैव अ मोर एनर्जी टू कम आउट, इट शुड हैव अ मोर एनर्जी टू कम आउट, एंड इट कैन कम एट 15 डिग्री सेल्सियस. कभी आपने देखा होगा इन द विंटर टाइम व्हेन गिविंग द हीट ड्यूरिंग मेकिंग टी, आप लोग को तुरंत क्या दिखता है, यू आर एबल टू सी वेपर्स, यस और नॉट. above the tea kettle you have been able to see vapors are coming, and when you are putting the finger temperature looks like 15 degrees celsius 10 degrees celsius, कुछ भी नहीं, बहुत ठंडा पानी दिखता है, फिर भी वेपर इज कमिंग आउट, क्योंकि आप ये लिक्विड का टेम्परेचर कितना हो गया 15, आउटसाइड टेम्परेचर इज व्हाट 10 in the winter, therefore it started coming out, you can be able to see. But in the summer outside temperature is 38, तो 15 पे तो वेपर आएगा ही नहीं. देन व्हेन यू स्टार्टेड गिविंग, समर में आपको जल्दी वेपर नहीं दिखता है, व्हेन यू स्टार्टेड गिविंग इट, सो एट 45 व्हेन द 45 हो जाता है तो थोड़ा सा हाथ डालते तो गर्म भी लगता है. देन द वेपर व्हेन द 45 लिक्विड टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर इज व्हाट 38, देन इट स्टार्टेड कमिंग आउट. सो द वेपर कैन फॉर्म एट एनी टेम्परेचर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड शुड बी ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ द atmosphere. Temperature of the liquid should be greater than, understood it? अब ये और एक एग्जांपल मैं हमेशा ये देता हूं, that I said that in the USA there is some great lakes are there और इसकी टेम्परेचर होती है 2 डिग्री सेल्सियस. What is the temperature? और फ्रॉम दिस साइड फ्रॉम कनाडा एंड आर्कटिक जोन से यहां से वेरी कोल्ड विंड कम्स, दैट इज आई सेड दैट ब्लिज़ार्ड, and its temperature is around -10.